आज आम स्टार्ट करवा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो एनालिसिस जो आम कहे। अच्छा गोटे बिजनेस की कैश फ्लो मोस्ट इम्पोर्टेंट हाँ ना नहीं गोटे बिजनेस केमती चलुची मतलब एक्चुअल कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो केते होची बिजनेस रे सेटा जानिया पे नॉर्मली हमें कौन करंती ना कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करंती। The cash is a vital element of any business entity as it plays a crucial role throughout the entire lifetime of the business enterprise. Cash for a business has been compared with the blood for a human body. ଆମ human body ରେ blood ଯେମିତି ଦରକାର ସେମିତି ଗୋଟେ business ଚଲେଇବା ପାଇଁ କି cash ବି ସେମିତି ଦରକାର। ତ କହିଲେ କି cash is required to meet the day-to-day requirement for the running of the business and for making payment to suppliers, wages, salary to the employees, interest, dividend, etc. And maintenance of an optimum level of cash is there for the maintenance of optimal level of cash is important for the business entity. So according to Indian accounting standard AS3, okay, the cash flow means inflow and outflow of cash and cash equivalent. So lucky cash business को आसिबा and business रो cash जिबा cash हो या फिर cash equipments हो जेमते हमें cash कह दोचे cash on hand and demand deposits with bank तक हमें धर कहचे cash बोली कि then cash equivalent कौन रहेगा ना जेमते हमें कह परिवा cash equivalent are certain highly liquid investment जोटा हमें कहचे which are readily convertible into cash जोटा कि easily cash रे convert हे पारिबो तो सेडो को हमें कहचे कि cash equivalent। बेसिकली कैश फ्लो मतलब कैश बिजनेस को आसीबा कैश बिजनेस रो जिबा इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स जो सब रहला। अच्छा देन आसो कि ऑब्जेक्टिव कोन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। The fundamental objective behind the preparation of cash flow statement is to underline and emphasize the changes having taken place in the cash position during a specific period. What a specific period रे cash position केमती change होची सर सेटा होचंती हमें main objective। The source from where cash were procured and by an organization and the uses to which the cash was put as एमती कह परियो कि को सोर्स रो हम पाखु कैश आसुची एंड को सोर्स रे कैश हमठु जाउची मतलब केमती हमें थाकु कैश को खर्च करचे किसी पेमेंट दोचे तो सेटा को हमें कहचे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें एक पे कि प्रिपेयर करचे तो जानिबा पई कि तो मेन कोन आछी ना showing the inflows and outflows कला कि source and application of cash into or out of the business during a specific period गोटे specific period रे cash केते inflow होची and केते outflow होची मतलब केते cash हम पाखु आसुची and केते cash हम पाखु जाउची तो सेटा जानिया पई कि हमें cash flow statement prepare करचे। Then disclosing the positive and negative features of cash management undertaken by an organization, but positive और negative features जोटा cash management रो जानिया पई कि हमें prepare करचंदी हमर cash flow statement। Then facilitating the policy formulation by the management in respect of certain financial matters such as dividend policy जेमते हमें कोचेस से तो बैंक भी हमें cash flow statement prepare करंती। Then ascertaining the liquidity position of the business organization। The next point is कि कौन ना finding out the net changes having taken place in respect of cash and cash equivalent। कौन changes आछी हमर cash and cash equivalent रे सेटा भी जानिया पई करछे। Then starting the trend regarding cash receipt and cash payment trend कौन रोचे हमें सेटा जानिया पई prepare करछे। Then finding out the deviation of cash from earning। Then ascertaining the financial position of the business enterprise in a more realistic manner and forecasting the cash position।
कहला कि कैश पोजीशन बिजनेस रो जानिया पई कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज जानिया पई कि मोस्ट रियलिस्टिक मैनर रे हमें कैश पोजीशन टा कहया गले जानिया पई कि हमें कोन करंती ना कैश फ्लो स्टेटमेंट हमरो प्रिपेयर करंती। अच्छा पहले जो कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर कैश फ्लो एनालिसिस जो हमें कहूचे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कौन ना जोटा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई जोटा कि रिवाइज करछंती ईयर 1997 रे सेटा रे कोन होची ना business organization में categorize its activities into three group कहला कि तीनटा ग्रुप रे त activities को से डिवाइड कर परिबो कोन ना operating activities then asला हमरा investing activities then asला financing activities। अच्छा तो हमें देखिबा कि operating activities कोन investing activities कोन financing activities कोन like normally amount of operating activities rauchi cash flow from the operating activities from the major position of the total cash flow and its source its from of core income generating activities of the enterprise. The total amount of cash flow generated out of the operating activities is also an important indicator of the enterprise operational efficiency and its ability to pay dividends and repay loans and make investment in new projects without looking for any external resources of the finance and information with regard to the level of cash flow from a specific category may be very useful along with certain other information in preceding future operating cash flows. ଗୋଟେ ओके तो हम कहले कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जोड़ा कि मतलब हमें कहि पारे कि हमरा सेल टाइम करी कि जोठ बे हमें पाउचे या फिर हम जदी किछि भी रिसीव करूचे तो सेटा को हम जेतले यूज करचे से टाइम रे सेटा होचे हमर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो सेटा एग्जांपल किछि कहले जेमते हमें शो करे जेठी कैश रिसीव्ड from the sale of goods and services, cash received as fees, commission, royalties, etc., cash paid to the suppliers for goods and services, cash paid to and on behalf of employees, then namara asila cash paid and received from an insurance company in connection with premium claims, annuities, and other policy benefits. And I'm going to cash relating to the refund of income tax जोटा कि हमें कहे कि provided they are classified either investing activities or financial activities. And last point हमारा आसिला कि cash transaction of the contract pertaining to the future forward operation or swap provided such contracts and derivatives are kept in the books of trading purpose मतलब trading purpose के लिए जो सब होची तो हमें सेटा को कहि परबा हमरो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड देन आसला हमरो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें कहले जो सब हमें कोन मतलब सेल करके जहां भी पाउचे या फिर किछि इनकम हमें रिसीव करचे देन हमें जदी किछि पेमेंट होचे तो से वाला आसला कि हमरो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन आसो हमरो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज investing activities kon hoila na the details of cash flow generated out of investing activities need to be revealed separately. This is significant in the view of the fact such cash flow symbolize the degree of the expenditure incurred for resources meant to generate income and cash flow in future जोटा कि हमें कहि परिबा जेंति cash payment made for the acquisition of fixed asset including those which are intangible or nature and हमें कहि परिबा कि further cash payments made in connection with the capitalized research and development cost and
self-constructed fixed asset are also considered as cash flow arising from investing activities. Then our next ଆମେ କହିପାରିବା କି cash proceed received from disposal of fixed asset, including those which are intangible in nature. Then cash paid for the purpose of shares, debenture, warranties, those and other such instrument of other companies and interest in joint venture. However, cash payments for the purchase of instrument which are cash and cash equivalent and next held for trading purpose are excluded. Trading purpose ପାଇଁ କି ଯାହା ବି held କରିଥିବ ସେଟାକୁ exclude କରାହବ. And then ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା cash received from the sale of share, debentures and जो joint venture ହେଲା. However, cash received from the sale of instrument ଯେତେବେଳେ ଆମେ receive କରୁଛେ ତ ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ନା cash and cash equivalent and held for trading purpose are excluded. ତ ଯେମିତି ଆମେ purchase time ରେ କରିଥିଲେ କି cash and cash equivalent ଆଉ heading मतलब ଯଦି ଆମେ ट्रेडिंग ପାଇଁ କି ହୋଲ୍ଡ କରିଛେ ସେଟାକୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିଥିଲେ ସେମିତି ଏଠି ବି ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ସ ଟାଇମ ରେ ବି ଆସିଲା ତ କ୍ୟାଶ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଶ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ କି ହୋଲ୍ଡ କରିଛେ ତ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିବା। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା କଣ ନା ଆଉ କଣ ରହିଲା ନା cash loan and advances extended to the third parties other than cash loan and advances extended by a financial company. Then cash received as the repayment of loan and advances extended to the third parties other than cash received as the repayment of loan and advances extended by a financial company. Then cash paid for the contract relating to futures forward operation and swap except when such contracts are held for trading purpose or the transaction is categorized as financing activity. जदि financing activities रे categorize अछि then ताको exclude करा, then जदि trading purpose ପାଇଁ कि अछि ताल ताको exclude करो. Then cash received for the contracts relating to future forward options and swap except when contracts are held for trading purpose or transaction is categorized as financing activity. जदि ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆମର ରୁଲ ଥିଲା ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିସିଭ କରୁଛେ ସେମିତି ବି ଆମର କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି କି ଫ୍ୟୁଚର ଫରୱାର୍ଡ ଅପସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱାପ ଯଦି ଆଉ ତାକୁ କଣ ନା ଯଦି ଆମେ ट्रेडिंग ପାଇଁ କି ହେଲ୍ଡ କରିଛେ ଦେନ୍ ତାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିବା। ଦେନ୍ ଆମର ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜଡ ଅଛି ଦେନ୍ ତାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିବା। ଏଟା ଥିଲା ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ मतलब ଯୋଉ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ସେଇ ସବୁରେ ଯଦି କ୍ୟାଶ ଇନଫ୍ଲୋ ଆଉଟଫ୍ଲୋ ହଉଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କଣ କହିଲା କି ଯେମିତି ଆମେ ଅପରେଟିଂ କୁ ଅଲଗାରେ ସେପାରେଟଲି ଶୋ କରୁଥିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ କୁ ସେପାରେଟଲି ଶୋ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରେ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ୟାଶ ଫ୍ଲୋ ଯୋଉ ସବୁ ଜେନେରେଟ ହଉଛି ତ ତାକୁ ବି କଣ ନା ଆମେ will show it separately show କରିବା as it facilitates forecasting the claim on future cash flow by the funds provider both long term and short term to the enterprise मतलब କହିପାରିବା କି long term and short term टाइम रे तो एटा कोन हमको फ्यूचर फोरकास्ट करिया ପାଇଁ हेल्प करछि जो फ्यूचर रो कैश फ्लो टाको तो सेत ପାଇଁ कि हमें एको भी सेपरेटली शो करबा। देन एग्जांपल कोन रहि परियो को केस रहि परियो ना कैश प्रोसीड ऑफ शेयर इश्यू एंड अदर सच इंस्ट्रूमेंट तो शेयर इश्यू कलो कि से टाइप रो जो सब इंस्ट्रूमेंट रहला से टाइम रे जदी कैश को प्रोसीड कलो। Then cash proceed for debenture issue and other debt instrument like bonds, loan, notes, and other borrowing both short term and long term. আমি কইলে না financing activity short term and long term दिरा जाको केस रे पॉसिबल रहइबो। तो से कहला कि डिवेंचर इशू करो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म जहां भी करो बॉन्ड्स लोन और नोट्स जहां भी कि अदर बोरोइंग सब रहला शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म केस रे एटा हबो हमरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देन repayment of the borrowed fund in cash जदि हमें किसी borrowed fund cash रे पेमेंट करूचे देन सेटा भी हमर जीवो फाइनेंसिंग एक्टिव मतलब हमें बोरो करी थिले देन हमें एबे
पेमेंट दौचे तार तो सेटा भी हमर हबो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देन आस कि मतलब एडवांटेजेस कौन डिसएडवांटेजेस कौन हमर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट रहउची एडवांटेजेस कौन डिसएडवांटेजेस कौन रहउची ना it facilitates measurement of the business enterprise ability to meet it fixed charges सेमते कोचे कि एडवांटेज कोन मतलब बिजनेस रो गोटे एबिलिटी मेजरमेंट करियो जेमती कया कि जदी फ्यूचर रे किछि फिक्स चार्जेस किछि आसला कि किछि भी कैश रो दरकार आसला तो से सेमती जेमती सेटा को मीट कर परथिबो। देन कहि परिबा कि helpful in ascertaining the changes in cash position जो चेंज होची सेटा को जानिया पे कि भी हमरो हेल्प करूची। देन आ कहि परिबा ना listing out the potential financial flows जोरा कहूची कि एरा फैसिलिटेट करूची मतलब हमको प्रोवाइड करूची कि पोटेंशियल फाइनेंशियल फ्लोज कोन रहूची जदि किछि क्राइसिस कंडीशन आसी जाउची बिजनेस को देन सेटा कोन करबा। देन तो डिसएडवांटेजेस कोन रहूची ना नॉन कैश ट्रांजैक्शन आर ओवरलुक कला कि हमें केवल एठी कोन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोटा रहूची सेटा को न तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन टा ओवरलुक कर जाउची। The entire focus of cash flow statement is execution जोरा को हमें exclusively हमें कोन केवल हमर कैश रो इनफ्लो एंड आउटफ्लो को देखुचे बट नॉन कैश ट्रांजैक्शन गुडा को जेमती दर purchase of building by issuing share debentures जो सब रहला कि मतलब कैश रे न करी कि यदि हमें share debentures ये सब रहला कि purchase of building by issuing share and debentures to the vendors और issue of bonus share are not out of the preview मतलब ये सब रे तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन जाउनी तो सेत कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन गुडा को ओवरलुक हे जाउची। देन हम कहि परिबा नॉट एन substitute for income statement कला कि income statement जोटा हमें कहचे ना an income statement of a business organization covers both cash and non cash item जेंते हमरा कहतले ना net income पड़तले हमरा PL जोटा कहतले cash रबी रहला नॉन कैश रबी रहला। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट कोन करछि ना केवल कैश रो transaction गुडा को रखुछि तो से cash flow statement on the other hand takes into the consideration only cash flows and such can show only net cash flow inflow or outflow मतलब केते कैश इनफ्लो होइछि केते कैश आउटफ्लो होइछि बट जेमते हमर इनकम स्टेटमेंट रे हमर जेन देखतला नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस सेटा शो करबनी कारण सेते बेले हम कोन नथले नॉन कैश आइटम को भी मतलब कंसीडर करूथिले बट कैश फ्लो स्टेटमेंट केवल कैश को कंसीडर करूची। then हमें कहि परिबा कि historical in nature preparation of cash flow statement involves in rearranging other financial statement like balance sheet and profit and loss account which contain past data and are historical in nature मतलब past को नेकी ही हमें prepare करछे जोटा कोचे हमें it would have been more useful and prospective in nature when accompanied with projected cash flow statement मतलब हमें कौन past डाटा नेकी कि ही हमें prepare करछंती तो जोटा कि कहला कि historical in nature रह जाउचे हमरो and ignoring the accrual concept जोटा थिला कि हमरो कोन ना one of the basic accounting concept जोटा is totally ignored while preparing the cash flow statement कि accrual रे कहतले जति कि हेछि ता छोडा जति कि हबार भी अछि ताकू भी हमें नथले ना तो इथरे कोन ना से जो accrual concept को हमें totally ignore कले।